Good morning, everyone. We'll start with the technical and derivatives outlook. So, looking at the chart pattern, I believe the Nifty is in uptrend, and now the close is at 19,800 level. So, gradually, I believe the all-time high level of 20,000 will be taken out. And if I look at the derivatives data, then 20,200 is the level which I'm keeping a watch on. Bias for the Nifty is positive for the week. 20,200 is what is the expected high. Lower side support is at 19,500 and 19,400 levels. And if we observe for the last couple of weeks, so 19,200 was a major support from where the Nifty has taken this support. But right now, I don't have a view for 19,200. The maximum correction can be expected during the week, can be somewhere close to 19,500 in the event of correction. But then the bias is very positive. This correction should be viewed as a buying opportunity. So, in coming to the Bank Nifty, the Bank Nifty is also now taken out the 45,000 level. So, all this while 45,000 level was acting as a resistance. So, the target for the Bank Nifty is another 1,500 points on the higher side. 46,300 was the all-time high level. So, I believe the Bank Nifty is poised to retest those levels. Once Bank Nifty retests and closes above that, then we can figure out the further upside target. But right now, 1,500 points positive for the Bank Nifty and 20,200 levels for the Nifty. So that's the technical view. So during the week, what we observed was there are many sectors which has outperformed. Basically, the media, realty, and the PSU bank. Specifically, the PSU bank is one which is giving a very strong breakout on the multiple time frame. So I think any PSU bank will can be viewed as a buying opportunity. Specifically, I do like Bank of India, SBI, and Canara Bank. So, but having said this, all the PSU banks are positive. So, any corrections or any opportunity in the PSU bank will be a great pick. Coming to derivatives data, there was a long momentum in the Nifty futures to the tune of 0.18%. The OI actually declined from 1.56 to 1.38 levels. The maximum put call writing was seen at 19,900 and 20,000. So that will be the immediate resistance. A lower side 19,600 and 19,800 put option. So that will be the support. Coming to Bank Nifty, there was a short covering to the tune of 0.55%. The put call ratio has declined in Bank Nifty from 1.32 to 1.27. The call writing was seen as 45,500 and 45,200. So that is the resistance. And even on the put side also 45,000 and 45,200. So mostly it's this more or less looks like a straddle. But the bias is very strong positive. If you look at the FI data, so again they have added some long positions close to 4,500 contracts. They are net long by 26,000 contracts. Long short ratio is 58%. Lastly, the three picks which we are very aggressively positive. One is CDSL. We are looking for a target of 1550 plus. Next one is the happiest mind. I think at current price it is a very decent buy. 1,050, 1,060 can be the upside target for the happiest mind. And one more pick which we are observing very strong is the Havels. The Havels, although the stock is at the all-time high level, it has given a very strong in a weekly time frame. It has given a very strong consolidation breakout. So I think Havels will continue to see the positive momentum. So that's the technical outlook for the week. I will hand over to Vishal sir for more research updates. Thank you. Yeah, good morning, sir. Good morning, team. First starting up with recently concluded G20 summit. Now, if you look at, in this particular summit, there was a launch of India, Middle East, European Mega Economic Corridor. And this is basically similar to what China Belt and Road Initiative is. And this particular project envisaged, there will be railway lines, there will be electrical cable, there will be hydrogen pipeline and high-speed data line that will be running through India, Middle East, and then ending at Europe. This particular partnership, so as of now, if you look at, it is still in MOU has been signed, but the concrete data in terms of DPR and what exactly the size of it will be known. But from a companies and stocks point of view, I think we can expect some bit of orders for the railway sector under this particular initiative. And as and when more announcement is made, so we'll keep you updated on this particular front. But this bodes well
basically, like, the total addressable market for the railway sector, it increases with the signing of MOU. Next is on further, like, during this summit only, we have seen US chip giant NVIDIA has partnered with Tata Group. TCS will utilize NVIDIA's AI infrastructure and capability to build and process generative AI applications for upskilling its 6 lakh odd workforce. So this is pretty positive for TCS, and we continue to have a buy rating on the stock with the target price of 3,740, and it's also among in our strategy note. It's one of our topic in note that we have published. Next, continuing on NVIDIA, so Reliance Industries will provide NVIDIA will provide the Reliance Geoinfocom access to its most advanced supercomputing services in the cloud build AI application. And if you look at this Reliance Industry will partner with the US-based chipmaker NVIDIA for developing its own India's own language model, which is like trained on various regional languages will be there. Tailored generative AI apps will be there. So that's pretty positive for Reliance Industries. Next, we have on PVR, which is on a positive side, where on the stock we have a currently target price of 1,805, and a bull case scenario we see an upside to even like 2,100. Now, if you look at the news, is the company has opened a 4 screen multiplexes in Karnataka, and now with this particular launch, company has roughly like 1,708 screens in 361 odd properties. This is pretty positive, and overall, I think if you look at news flow, particularly on the Jawan front, continue to remain pretty positive in terms of the collection which has done. Next is on Tata Steel, where we currently have a hold rating, and company has acquired roughly like 26 lakhs odd share at a price of 427 for Indian Steel and Wire Products Limited, subsidiary of a company on a professional basis. This fund will be utilized by the subsidiary company for meeting the capital expenditure. And this basically means like, company is moving more towards the finished product, which is into steel and wire as a sector and segment. Next is on SJVN. On the positive side, the company has signed an 18 megawatt solar power purchase project in the state of Himachal Pradesh and Punjab. And this particular agreement in SJVN is signed by its subsidiary, SJVN Green Energy. And this is positive, and this agreement is for 25 odd years. Last thing from my side is on REC. So the shareholder has approved a special resolution for raising funds and funds through private placement of unsecured and secured non-converted debentures, which is roughly like 1 lakh odd crore. And if you look at even the stock is pretty positive. The borrowing limit with this particular thing has increased from 4.5 lakh odd crore to 6 lakh odd crores, which means like further we can expect a loan growth in REC going ahead to be pretty strong and positive. Yeah, so that's all from my side, and I'll hand it to the team now. Over to you. Yeah, thank you, sir, and good morning, everyone. So we'll start with some further updates regarding a few stocks. So first update out of which is on Grasim, where the textile division of Grasim is planning to expand its footprint in smaller cities and towns by opening around 100 to 120 retail stores over the next couple of years. So should be a positive update for the company. Next one is on Balram Chini, where Vivek Sargoi, who is the chairman and managing director of the company, said that this stand to gain some solidity amid the high sugar prices and lower surplus in the country as it derives more volume from the UP segment. Next update is on Schaeffler India, where the board has approved acquisition of 100% shareholding of KRSV Innovative Auto Solutions, which should be a positive update for Schaeffler. The next update is on Phoenix Mills, where the company has announced the opening of Phoenix Mall of the Millennium at Pune, which is again a positive update for Phoenix Mills. Next update is on Adani Enterprise, where the promoter acquired additional 2.06% stake in the company from August 21st to 7th of September. Overall, the holding has risen to 71.93%. Next update is on Adani Ports, where promoter again has acquired additional 2.17% stake from August 14 to September 8. Overall, the holding of the promoter has rose to 65.23%. Next update is on India Glycol, where company has sold its entire stake in Shakumbari Sugar for rupees
90.2 crores. It should overall be a positive update for India Glycol. Speaking of VRL Logistics, SBI Mutual Fund has bought rupees 131.36 crore shares in VRL Logistics, so definitely should be a positive update for the company. Next update is on Siemens India, where the company's contingent liability of rupees 106.5 crores has been reduced after the income tax appellate tribunal squashed the assessment orders of income tax. Speaking of IRCTC, the company will arrange catering facilities in all trains booked on full tariff. So this should definitely have a positive impact on the stock price of IRCTC going into today. Next update is on UCO Bank, where the bank has hiked lending rates by 5 basis points across 10 years. Speaking of Coffee Day, application filed against the company under Section 7 of Insolvency and Bankruptcy Code. So this should be a slightly negative update for Coffee Day. Speaking of ITC, company has cut Savlon sanitizer price of rupees 50, of 55 ml to rupees 27 from rupees 77. Next update is on Balaji Amines, where the specialty chemicals maker said that its arm Balaji Specialty Chemicals Limited has withdrawn its initial public offering prospect. Uh, Speaking of Sham Metallics, the promoters have proposed OFS to sell 6.30% stake with a floor price of rupees 414 per share. Closing would be rupees 467.8. It is a slightly negative update for Sham Metallics. Final update is on Natco Pharma, where the company has been named as a defendant along with others in the antitrust lawsuit in the US by Louisiana Health Service. It should be a negative update for Natco Pharma. So this was all from my side. I will now hand it over to Shitija ma'am for the further updates. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग एक और को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है रेलवे सेक्टर के ऊपर। अभी जो G20 समिट चल रही थी उसके टाइम पे मतलब उसमें अनाउंस किया कि वो लॉन्च करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। बेसिकली ये जो कॉरिडोर है उसमें रेल लिंक और इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, हाइड्रोजन पाइपलाइन एंड हाई स्पीड डेटा केबल्स कॉरिडोर में इंक्लूड है। और ये जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट जो है वोन देयर लायन उनके अनुसार है। एंड ये जो PGI है दैट पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये कंसिडर करती है कि ब्लॉक्स जो काउंटर है चाइनास का बेल्ट का रोड इनिशिएटिव का। एंड ये प्रोजेक्ट में इंक्लूड है इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन एंड US। ये रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर एक पार्ट है पार्टनरशिप जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट PGI का। ये बेसिकली कोलैबोरेटिव एफर्ट किया था G7 जो नेशंस है फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपिंग नेशंस में। देन नेक्स्ट अपडेट है REC के ऊपर। शेयर होल्डर ने अप्रूव दे दिया है स्पेशल रिजोल्यूशन जो फंड रेज करेंगी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे अनसिक्योर्ड और सिक्योर नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स डिबेंचर्स, और ये अप टू होगा 1 लाख करोड़। और ये मोस्टली वन और मोर ट्रांसेस में होगा टिल सितंबर में। और ये जो कंपनी है ओवरऑल उनका जो बोरोइंग लिमिट है कंपनी का फ्रॉम 4.5 लाख करोड़ टू 6 लाख करोड़ होगा। उनके 54th AGM में अपडेट किया है। देन SGVN कंपनी है उसके ऊपर अपडेट है। वकरा बेस्ड मैनेजमेंट बोर्ड है, उन्होंने SGVN उनके साथ एक 18 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट साइन किया है। ये हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में होगा प्रोजेक्ट। और ये सब्सिडरी SGVN जो ग्रीन एनर्जी उनकी जो कंपनी है SGVN ग्रीन एनर्जी, उन्होंने भी साइन किया है पावर परचेस एग्रीमेंट ये 25 ईयर्स के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। निवेदिया है उन्होंने प्रोवाइड किया रिलायंस जियो इन्फोकॉम एक्सेस मोस्ट एडवांस सुपर कंप्यूटिंग सर्विस क्लाउड जो बिल्ड करेंगे AI एप्लीकेशंस 450 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स के लिए। और उसके अलावा स्टेक होल्डर्स जो है इंडिया की टेक्नोलॉजी स्पेस में उनके लिए भी।
रिलायंस इंडस्ट्री पार्टनर करिए यूएस बेस्ड चिप मेकर नेविडिया, जो डेवलप करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल और वो ट्रेन करेंगे रीजनल लैंग्वेज और टेलर होगा जनरेटिव एआई एप्स, तो ये पॉजिटिव है। टाटा स्टील के ऊपर अपडेटेड, टाटा स्टील अक्वायर करने वाली है 26,22,890 इक्विटी शेयर्स, इशू प्राइस है 427 पर शेयर। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड आईएसपीपी में जो सब्सिडरी कंपनी है ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस पे, और जो अमाउंट है जो एग्रीगेटिंग है अप्रोक्सीमेटली 1.1 बिलियन है। ये फंड बेसिकली यूटिलाइज होंगे आईएसडब्ल्यूपी जो है उसके मीटिंग एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के, और ये बेसिकली कॉम्बी मिल प्रोजेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है। देन नेक्स्ट अपडेट है पीवीआर आइनॉक्स के ऊपर। कंपनी ने नए 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स स्मार्ट सिटी मॉल धरवाड़ा कर्नाटका में ओपन किए हैं। ये एक इपिक बेस्ट क्लास सिनेमा टेक्नोलॉजी है, उसमें इंक्लूड्स 4K आरजीबी लेजर प्रोजेक्शन सिस्टम है, रेजर शार्प विजुअल्स है, डॉल्बी ऑटम्स है, इम्प्रेसिव साउंड एक्सपीरियंस है, वाइब्रेंट 3D व्यू है। ओवरऑल ये लॉन्च के साथ कंपनी ऑपरेट्स करती है लार्ज मल्टीपल नेटवर्क 1708 स्क्रीन का अक्रॉस 361 प्रॉपर्टीज में और 115 सिटीज में, इंडिया एंड श्रीलंका उसमें इंक्लूड है। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस है 1805 पर। बुल के सिनेरियो में स्टॉक 2100 तक भी जा सकता है। टीसीएस के ऊपर अपडेट है, यूएस चिप जायंट निविडिया पार्टनर्स वो टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये टीसीएस यूटिलाइज करेंगे न्यूडियाज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी जो कैपेबिलिटीज है बिल्ड एंड प्रोसेस जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस की, वो अपस्किल करेंगे अराउंड 6 लाख प्लस वर्कफोर्स। एंड ये ओवरऑल अच्छा रहेगा टीसीएस के लिए। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है। द नेक्स्ट अपडेट है ग्रासिम के ऊपर। टेक्सटाइल डिवीजन जो ग्रासिम कंपनी है उन्होंने प्लान किया कि वो एक्सपांड करेंगे उनका फुटप्रिंट स्मॉलर सिटीज में एंड टाउन्स में, जो ओपनिंग करेंगे अराउंड 100 से 120 रिटेल स्टोर्स नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में। देन बलरामपुर चीनी कंपनी है, उनके जो विवेक सर वो ही चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बोला कि वो स्टैंड करेंगे गेंस सॉलिडिटी हाई शुगर केन प्राइसेस और लोअर सरप्लस कंट्री में, और ये बेसिकली ड्रिव्स करेगा मोर वॉल्यूम उत्तर प्रदेश से। देन नेक्स्ट अपडेट है शैपलर के ऊपर। कंपनी के बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया कि 100% एक्विजिशन शेयर होल्डिंग केआरएससी और इनोवेशन ऑटो सोल्यूशन में। देन जो फिनिक्स मिल्स कंपनी है उन्होंने अनाउंस किया कि फिनिक्स मॉल जो मिलेनियम है वो ओपनिंग होगा पुणे में, तो ये पॉजिटिव है। देन अदानी इंटरप्राइज है उनके प्रमोटर है, उन्होंने एक्वायर किया एडिशनल 2.06% स्टेक कंपनी में 21 सितंबर 7 में, और ये होल्डिंग राइज होगा 71.93%। देन एथॉस जो कंपनी है उन्होंने कंपनी ने अचीव किया फेवरेबल आउटकम दिल्ली में बैड मैटर का। देन इंडिया ग्लाइकोल कंपनी है उन्होंने सोल्ड किया उनका एंटायर स्टेक शकुनबरी शुगर में, और ये जो स्टेक सेल करने की जो वैल्यू थी वो है 90.2 करोड़ की। देन जो शुगर स्टॉक है और प्राज इंडस्ट्री है उसके लिए अपडेट है कि इंडिया प्रपोज करने वाला है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो बेसिकली इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% करेंगे। देन बीआरएल लॉजिस्टिक है, उनमें म्यूचुअल फंड कंपनी है उन्होंने बॉट किया है 131.36 करोड़ शेयर्स। आरबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उन्होंने जो ट्रस्ट है उन्होंने रिपोर्ट किया टोल रेवेन्यू 417 करोड़ का मंथ ऑफ अगस्त के लिए, और ये शोकेस करता है कि उनकी जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो 24% की है। सीमेंस जो कंपनी है उनके जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वो 106.5 करोड़ है, वो रिड्यूस होके आफ्टर उनका जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल क्वाश था असेसमेंट ऑर्डर्स ऑफ इनकम टैक्स के बाद। देन आईआरसीटीसी कंपनी है वो अरेंज करेंगी कैफेटेरिया फैसिलिटी और ओवरऑल ऑल ट्रेन्स में, जो बुक टैरिफ होगा उसके ऊपर। देन कॉफी डे जो एप्लीकेशन था फाइल हुआ था अगेंस्ट सीईओ अंडर सेक्शन 7 जो इंसॉल्वेंसी और बैंक के अंतर्गत।
देन इंसेक्टिसाइड जो कंपनी है उन्हें फायर एक्सीडेंट हुआ था, अक्योर्ड हुआ था उनके जो प्लांट है गुजरात में, तो ये इसका रिएक्शन देखने मिल सकता है। आईटीसी कंपनी है उन्होंने कट किए सैवलॉन सैनिटाइजर के प्राइस 27 रुपीज फ्रॉम 77। बालाजी अमन स्पेशल कम्युनिटी केमिकल जो मेकर है उन्होंने उनके जो आर्म है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल्स, उन्होंने विड्रॉ किया उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोस्पेक्टस। नाटको फार्मा जो कंपनी है उन्होंने नेम किया है डिपेंडेंट अलोंग जो अदर एंटीट्रस्ट लॉसूट है यूएस में लुसिनिया हेल्थ सर्विसेज के लिए। ओवरऑल हम लोग मार्केट के व्यू देखें तो हम लोग ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोनों पे पॉजिटिव है ये वीक के लिए। तो आप उसके अलावा जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं उसमें हेवल्स है, सीडीएसएल एंड हैप्पीएस्ट माइंड है। तो ये स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम आर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग द मॉर्निंग कॉन कॉल। हैव अ नाइस डे।